we are going to start a new chapter, namely the life processes. Okay, तो ऐसे प्रोसेस जो कि ऑर्गेनिजम्स बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके, जिसमें आ जाता है न्यूट्रिशन जो कि हम खाना खाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि खाना हमने खाया वो पूरी बॉडी तक कैसे एनर्जी पहुंचाएगा, रेस्पिरेशन उस खाने में से एनर्जी कैसे निकलती है, एंड एक्सक्रीशन जो कि वेस्ट मटेरियल है वो बाहर कैसे निकलता है। तो ये सारी प्रोसेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे विद वेरी डीप नॉलेज। Activities by which living organisms take food, derive energy, remove waste of the body and respond to changes in the physical processes are called life processes. Okay, इसको in this lesson you will learn about some basic life processes, namely nutrition, respiration, transpiration of nutrition and fluid in body and excretion. ओके, तो पहला जो हम पढ़ने वाला है रेस्ट न्यूट्रिशन। तो हमें फूड क्यों जरूरी है? ओके, हाउ वी गेट फूड एंड यू मे फील एग्जॉस्टेड एंड वीक। ओके, यू मे फील एग्जॉस्टेड एंड वीक। आपको कई बार खाना खाने के बहुत टाइम बाद एग्जॉस्टेड फील होगा, वीक फील हुआ होगा, तो वो कैसा क्यों होता है? यू विल प्रोबब्ली से नो, food provides essential raw materials that our body needs to grow and stay healthy. It also provides energy due to the carry out various life processes. हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस हो रही है उसको एनर्जी चाहिए, हार्ट को भी एनर्जी चाहिए मूवमेंट, ओके, बीटिंग के लिए हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, तो वो सारी एनर्जी फूड से मिलती है। दैट्स व्हाई वी फील हंग्री। इन अदर वर्ड्स फूड सर्व्स provide energy to carry out life processes such as respiration, digestion, excretion, etc., helping growth of body and repair worn out and damaged cell and tissues, and helping production of enzymes in hormones in the body. जो enzymes और hormones हैं हमारी body में उसे develop करने में यहाँ पर help करता है। तो very first process is called nutrition. So nutrition is defined as the process by which we obtain food, change food into simple absorbable form and use it to make it substance needed by the body. हम रोटी खाते हैं, उसको हम डाइजेस्ट करके a simple form में उसे हम तोड़ते हैं, जिसकी वजह से एक simple form absorbable form हम कन्वर्ट करते हैं। Okay, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो there are autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition मीन जो खुद अपना खाना बनाता है, and heterotrophic nutrition मीन जो कि दूसरे ऊपर डिपेंड है। A green plants, algae and certain bacteria manufacture their own food from photosynthesis. They are termed autotrophs and their mode of nutrition autotrophic nutrition. They are the producers of the food chain and all organisms depend for food on them. तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड है, जो कि हो जाते हैं हमारे प्लांट्स। तो प्लांट्स ही हमारे नेचुरल प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऑन द अदर मोड, ओके, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक मींस इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, उसको खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे और उसमें से एनर्जी लेंगे। ओके, तो होलोइक न्यूट्रिशन इंक्लूड्स इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एज इन अमीबा, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग्स। बट इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक जब हम बात करें, हैव यू एवर बीटन बाय अ हाउस लूज और बिग बग और हेड worm inside the body? These organisms that live in or inside the organism and derive their food from them without harming them. ओके, आपने देखा होगा कि जो मॉस्किटो होता है वो भी हमारे पर फीड करता है, वो हमारे ब्लड के ऊपर फीड करता है, तो वो भी एक पैरासाइट है यहाँ पर, जो कि हमारे बॉडी के अंदर और या फिर बॉडी के बाहर रहकर हमारा न्यूट्रिशन लेता है। किस्कटा और डॉपलर प्लांट एम्बरबेल इज अ पैरासिटिक ऑन ग्रीन प्लांट। तो ये जो दो है वो यहाँ पर पैरासिटिक है ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट में न्यूट्रिशन लेता है। एंड द नेक्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन।
is saprophytic nutrition that you have must seen a white cotty growth developing on a wet leather shoes or bed, especially when they are wet during rainy days. तो यहाँ पर जो फंजाई एल्गे उग जाती है वो एक ऐसा न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करती है कि वो saprophytic means dead and decay. The fungus grows on feed on substances which were once part of living organisms such as stored food, wood, leather, rotten plants products. Some common examples are mushroom, bread molds, yeast. Organisms that derive their food from dead and decay material organisms are called saprophytes. The saprophytes helps to cleaning the environment by decomposing and decaying organic matter. तो एक टाइप से एक व्यू से हम क्लीनिंग कर रहे हैं ऐसा भी हम मान सकते हैं. Nutrition in plants when they are autotrophs. हमें पता है the plants are the autotrophs. They make their own food. They make their own food by their own with such processes like a photosynthesis. So photosynthesis is a biochemical process by which the green plants manufacture their own food using carbon dioxide, water as raw material and sunlight. ये जो raw materials है उसको यूज करकर यहाँ पर उनका खुद का खाना बनाता है and chlorophyll. Oxygen is released as a byproduct in this process. तो यहाँ पर एक process हो गई that 6 molecules of CO2 plus 12 molecules of H2O leads to C6H12O6. 6 means हो गया ग्लूकोज जो कि प्लांट्स की बॉडी में इन फॉर्म ऑफ स्टार्च वो स्टोर्ड रहेगा एंड 6H2O and 6O2 liberated in the air. तो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स क्या हो गए इसके लिए? जैसे क्लोरोफिल. To carry out photosynthesis, plants require raw material जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. Light gives energy for photosynthesis. Photosynthesis takes place in chloroplast and cells of leaf. The green color of plant is due to chlorophyll. Chlorophyll is in the chloroplast. It can trap light. वो light को trap कर सकता है. Sunlight. Sunlight is absorbed by chlorophyll as a solar energy. Carbon dioxide and water. So carbon dioxide and water are combined in the chloroplast with the help of number of enzymes to yield sugar, which is converted into starch. Sugar means 6H12O6. उसको हम starch में फिर convert किया जाता है. Oxygen formed during the photosynthesis diffuses out into the atmosphere through the stomata. Mechanism of photosynthesis क्या रहती है वो हम देखेंगे. The photosynthesis occurs in two steps. There is a light reaction and the second one is a dark reaction. In the light reaction, the light is captured chloroplast. तो यहाँ पर light reaction में जो chlorophyll है वो light को absorb करती है. The reaction occurs in the chloroplast. In the dark reaction, glucose is formed जो कि energy chlorophyll ने absorb की. Light reaction के दौरान वही energy अब utilize कर जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है वो अब ग्लूकोज फॉर्म होगा. डार्क रिएक्शन occurs in the chloroplast. The dark reaction and light reaction occur simultaneously. Simultaneously means एक दूसरे के बाद यहाँ पर light reaction and dark reaction होते हैं. What happens to the end products of photosynthesis? As seen in figure 22.1, glucose is formed in photosynthesis. Glucose जो होता है वो form होता है photosynthesis. It is either used up by the cell or is converted and stored in form of starch. The other end product, oxygen, is released to the atmosphere. Energy is released during photosynthesis. तो यहाँ से ऐसे energy एक तो ऑक्सीजन रिलीज किया, एक खुद के लिए खाना बना है जो कि स्टार्च हुआ, तो प्लांट यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर बिहेव करता है. What are the significance of photosynthesis? The photosynthesis is responsible for providing food to all living beings. Okay, carbon dioxide produced during respiration by all living beings is used up by photosynthesis and does not accumulate in the atmosphere. जो भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो यहाँ पर सभी ऑर्गेनिजम्स द्वारा यहाँ पर इनटेक होता है. Oxygen released during photosynthesis is used for respiration by living beings. By talking about nutrition in humans, हम फूड लेते हैं तो हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो तो पहले नोट डाउन कर लो. For healthy growth and development of body, we
you all need to eat food that provide enough for essential nutrition. So nutrients are the chemical substances present in our food which nourish our body. Nutrients are broadly divided into the energy building nutrition. There is a carbohydrate and fat. Body building nutrition. There are the proteins and growth regulating nutrients. There are the vitamins and minerals. तो उसको हम one by one study करेंगे. While talking about carbohydrates, carbohydrates are the main source of our diet. Source of energy in our diet. Carbohydrate may be in form of sugar, starch or cellulose. Types of carbohydrate: sugar जो कि हमें मिलता है fruits, milk and sugar cane में से. Then the starch हमें मिलता है potato, rice, sweet potato, wheat. And cellulose जैसे कि roughage जो कि होता है salad, raw vegetables में से मिलता है. Next is fat. Fat जो कि होता है fat keep the body warm, help in transportation of fat soluble vitamins. Some common sources of fat are edible oil, ghee, butter, meat and nuts like groundnut. 1 gram of fat can oxidize about 37 kilojoules of energy. Sources of edible oil, ghee, butter, meat, nutrients like groundnuts. Nuts like groundnuts. The next one is protein. You must have often heard that mother insisting on your having a glass of milk or a bowl of cooked pulses or an egg. All these are rich in proteins. Growth of body tissue is main function of this protein. Vitamins. You often heard that your mother saying eat carrots and your eyesight will improve. This is because the carrot contains vitamin A. What are the vitamins? Because the vitamins, they are necessary for normal growth and maintenance of the body and are required in relative small amount. Deficiency of particular vitamin cause certain diseases. Overdose of vitamins such as A and D is harmful. Vitamins may be water soluble and fat soluble. तो जो water soluble vitamins है वो होता है विटामिन B complex और C. यहाँ पर जो विटामिन B, okay, and the fat soluble vitamins are the A, D, E, K. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. टाइप्स ऑफ विटामिन और ये डिजीज, ये आपको टेबल स्टडी करना है कि कहाँ से सोर्सेस मिलते हैं, क्या फंक्शन है उसका, और वो नहीं होगा तो कौन से डिजीज होगी. जैसे कि विटामिन ए तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी1 तो बेरी डिजीज, विटामिन बी12 तो एनीमिया, विटामिन सी तो स्कर्वी, विटामिन डी तो रिकेट्स, विटामिन ई तो अफेक्ट्स फर्टिलिटी, विटामिन ई, vitamin K, excessive bleeding from wound. Then the next one is minerals. The minerals such as iron, calcium, sodium, potassium, iodine, etc. are required for body in small quantities. There micro requirements are there indicating the source and function of some important minerals. यहाँ पर minerals जैसे कि iron तो form करता है hemoglobin. Next one is calcium for the strong gaining strength of the bones and teeth. Next one is potassium for growth and keeping osmotic balance of cell and blood. The next is iodine for body metabolism, development of brain. The next, water is one of the important part of our diet. It makes 60 to 70% of our body weight. Water regulates the body temperature and is a medium for biochemical reaction takes place in the body. जो कि chemical reaction हो रही है उसे medium provide करवाता है. Raw vegetables help in bowel movement. It forms a roughage needed to prevent constipation. जो यहाँ पर जो भी हम सैलड लेते हैं तो वो उनका पर्पस यही होता है कि prevent constipation and roughage prevent दे हमें. Balanced diet. You are not aware of the components of diet. Try to analyze your own food intake. Do you include at all components in your diet? For healthy growth and development, you need to eat food that provide all essential nutrients at some correct proportion. Eating a variety of food in proper quantity every day constitutes a balanced diet. Balanced diet contains adequate amounts of essential nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, minerals and water. The portion may depend on age, sex and pregnancy. तो यहाँ पर डिपेंड करता है कौन से टाइम पर हमें कौन से विटामिन, कौन से
न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हमें जरूरी है। डाइजेशन द प्रोसेस, तो जो डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। जो द फूड दैट वी ईट can be used by the cell in form in which it is eaten. Conversion of complex material into smaller substance so that it can be absorbed by cell is called digestion. Taking out of food and is called ingestion. Alimentary canal is the longest constituent tube constituting made up of mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and rectum. Okay, from starting to ending जो कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल हमारा लॉन्गेस्ट कंस्टिट्यूएंट ट्यूब है जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व है। द ग्लैंडुलर ऑर्गन्स लाइक सराउंडिंग ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास एंड द एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रिक्वायर्स एंजाइम प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव juices secreted by the organ of digestive system. They convert complex substance into simpler ones. Enzymes are chemical which speed up the chemical reaction taking place in the cell. Almost all enzymes are complex proteins and remain unchanged during the chemical reaction. They can therefore be used repeatedly. Enzyme है वो digestion में help करते हैं. The process involved in nutrition. The entire process of nutrition includes the following steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो हम पढ़ने वाले के डाइजेशन में होता क्या है। The process of taking in food to the mouth is called ingestion. The digestion food starts from mouth and ends in small intestine. The mouth, the function of mouth is the carbohydrate. Digestion of carbohydrates such as starch are broken down into digestive to form a sugar. Saliva contains an enzyme like salivary amylase that break down starch into the sugar. It also helps in lubricating the food and making it easier for swallowing. Next is esophagus. There is no digestion in this part. Esophagus में कोई भी digestion नहीं होती. It is also called a gullet. तो एक पाइप होती है which connects mouth to stomach. Esophagus or the food pipe by the contraction of muscle in its wall push. And this movement is termed as peristalsis and help food travel down to the alimentary canal. Next is stomach. So function of stomach is the structure of stomach is a highly muscular organ. The gastric glands present in the wall secretes gastric juice containing a hydrochloric acid and enzymes like pepsinogen. HCl actives pepsinogen into pepsin and kills bacteria from off the food. Proteins are broken into smaller fragments called peptones by the enzyme pepsin. यहाँ पर pepsin के दो फंक्शन दिए which activates the pepsinogen. Okay, HCl activates the pepsinogen into pepsin and pepsin kills the bacteria and proteins को भी वो digest तोड़ती है peptones and peptides में. The small intestine, the food moves from stomach to duodenum, which is the upper part of the small intestine. यहाँ पर small intestine है वो we will go through the complete structure by small intestine. यहाँ पर emulsification, fat is broken into fat droplets takes place while the bile juice is secreted by the bile and stored in the gallbladder. Bile does not have any digestive enzyme, but it creates an alkaline medium which is essential for action of pancreatic juice. यहाँ पर जो bile है, bile juice है वो digestion में कोई help नहीं करता, कोई भी substance digest नहीं करता, but provides the proper medium, that is alkaline medium, for the digestion of food. The pancreatic juice contain trypsin, amylase and lipase. तो जो trypsin होता है converts peptones to peptidoglycans and smaller peptides. Amylase होता है that converts starch to maltose जो कि तोड़ता है starch को, and the lipase which convert fat into fatty acid and glycerol. तो यहाँ पर डाइजेशन हो गया जो भी हमने खाया उसका. The digestion of protein into the end products amino acid, carbohydrates into glucose and fats into fatty acid and glycerol is completed in small intestine. The inner surface of small intestine contains the thin finger-like projection called villi जो कि absorb करते हैं small intestine के end part जो कि इलम कहते हैं उसे. इलम में यहाँ पर various finger-like projection होते हैं जो कि surface area increase करते हैं और वहाँ पर maximum blood supply रहता है for absorption. Capillaries lining in the villi, the blood then carries the absorbed food to the different part of the body and undigested is pushed into the large intestine. For small intestine and पर
जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो गया और जो अनडाइजेस्टेड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो गया. What is jaundice? हम देखेंगे. When a person suffers from jaundice, the skin looks pale in the yellowish tinted due to the large amount of bilirubin and bile pigment in the body. The urine becomes deep yellow. Jaundice is caused by hepatitis virus. The virus is a different type that now there is an injection that provides immunity from the virus. The infection usually comes from infected water. Large intestine. This part of body absorbs water from undigested food and solid waste. Is lubricated to form feces. Water absorb हो जाता है और feces form हो जाता है. The feces pass on to the lower part of large intestine called rectum and are thrown out of the body through the anus. The absorption की बात करें तो absorption blood capillaries in the villi pick up the digested food and take it to the all cells. So यहाँ पर absorption villi करता है. Assimilation, the absorbed food supplied to the cell is called release energy and also up to the building of the cell component. This is called assimilation. Next, egestion. Egestion is processed by undigested food material is released from the body is called egestion, जो कि निकल जाता है. तो यहाँ पर ओके डाइजेशन तो हम एक बार पूरा स्ट्रक्चर वाइज देख लें कि क्या क्या कंपोनेंट्स है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के. ओके तो वाइल स्टार्ट करते हैं माउथ से. ओके तो यहाँ पर स्टार्टिंग हम करते हैं माउथ से. माउथ यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है जो कि रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड से. इसे कहते हैं इसोफेगस. इसोफेगस. This is stomach. स्टमक के यहाँ पर 3 पार्ट्स रहते हैं. कार्डियक स्टमक, फंडस एंड पाइलोरिक. ये हो जाता है टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्टमक. अब स्टमक के बाद यहाँ पर रहता है लीवर एंड दिस इज गॉल ब्लैडर.
सीक्रेट होता है लीवर में से बाइल जूस। ओके, देन दिस ऑर्गेनली यहाँ पर है वो है पैंक्रियास। Pancreas. While talking about this is small intestine. Okay. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है जिसके 3 पार्ट हैं। Okay. Duodenum, jejunum एंड इलम। ड्यूडेनम में फूड में से, स्टमक में से फूड एंटर होता है ड्यूडेनम में, जहाँ पर बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस मिक्स होता है। जेजुनम में जो एक्चुअल डाइजेशन हो रहा है वो जेजुनम में होता है, और इलम में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। फिर यहाँ से ये हो गया हमारा, ये जो पॉइंटेड है वो है वर्मीफोरम अपेंडिक्स। ओके, आपने नाम सुना होगा कि अपेंडिक्स वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एट द बिगिनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो है जहाँ पर एब्जॉर्ब होता है वाटर, जिसे कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट्स रहते हैं, सीकम। ओके, तो ऐसा कहते हैं कि सीकम के ऊपर वर्मीफोरम अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट वन सीकम, नेक्स्ट इज कोलन, जो जहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो मैक्सिमम होता है, और लास्ट वन इज रेक्टम, जहां पर स्टोर होता है जो कि फीकल मैटर है हमारा, जो कि डाइजेस्ट हो गया है और अब सिर्फ उसे निकालने की जरूरत है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसमें पूरा डाइजेशन होता है। एट द एंड जो भी हमने खाया है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा थ्रू एंस। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ से स्टार्ट हुआ और एनस पे खत्म हुआ हमारा डाइजेशन। ओके, तो ये पूरा आप नोट कर लो क्या क्या पार्ट्स है, और पार्ट्स को इसलिए याद रखना है क्योंकि जब आप इसे एक्सप्लेन करो तो जो आंसर का लेंथ है वो मैक्सिमम रहे। अगर आपको पूछा है कि हाउ फूड इज डाइजेस्टेड, तो आपको पूरे जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी एसोसिएटेड है कि कौन से फंक्शन से परफॉर्म करते हैं, वो आप सब लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका आंसर का जो क्वांटिटी होगी एज वेल एज क्वालिटी वो अच्छी रहेगी। Okay, so here we have finished our digestion। आप देखते हैं कि डाइजेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, डिसऑर्डर्स हो, तो क्या क्या हो सकता है। A disease that caused due to lack of adequate and balanced diet, that is deficiency disease। कोई भी जरूरी चीज अगर ना हो तो जिससे डेफिशिएंसी होती है तो वो हम पढ़ेंगे। मिनरल्स एंड प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी 3 डिजीज को क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज PEM, क्योंकि होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज एंड विटामिन डेफिशिएंसी। तो फर्स्ट we are going to see protein energy malnutrition, then the disease of proteins in the diet cause PEM। this is a prime reason why your parents insist you should drink milk, eat and other sources of protein। जैसे कि PEM की 2 डिजीज है, मारास्मस एंड क्वासिकोड। तो यहाँ पर दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। It affects the child up to 1 year of age। It occurs in children deprived from mother milk। The symptoms are loss or wasting of muscles, body develop loose fold skin and ribs become prominent। Ribs prominent means दिखने लगता है। Body growth and development slows down। It is cured by ensuring mother's milk enough for infant and by having a diet rich in protein, carbohydrate, fats, vitamins and minerals। Next is Kwashiorkor, that is among children of 1 to 5 age, protein deficiency causes
क्वासिकोर। दिस सिम्टम्स जो कि है वो एनलार्जमेंट ऑफ रिवर ड्यू टू वाटर रिटेंशन, darkening of skin with scaly appearances, hair becomes reddish brown, leg become thin, and retarded or physically mental growth, retardation of physical and mental growth. Eating a protein rich diet that consists of milk, meat, groundnut, soybean, jaggery can cure this disease. Next is the mineral deficiency disease. The two common mineral deficiency diseases are goiter and anemia. गोइटर होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से एंड अनीमिया विटामिन B12. Cause due to the prolonged iodine disease cause enlargement of thyroid gland. Iodized salt, seafood are good sources of iodine. The next is anemia. Iron deficiency cause lesser production of hemoglobin, resulting in anemia. An iron-rich diet consists of a spinach, apple, banana, guava, eggs, groundnuts, etc. can help to cure anemia. Next is vitamin deficiency. अगर विटामिन में कमी हो तो कौन सी डिजीज होगी? ऊपर तो हमने देखी है कि विटामिन A, B1, B12 से कौन सी, लेकिन एक मेजर ब्रॉड ऑफ यहाँ पर है वो है फूड अडल्ट्रेशन, जो कि फूड अडल्ट्रेशन मींस एडिबल के साथ एक्स्ट्री कुछ फूड आइटम्स के साथ अटैच करना जो कि हमें नुकसान पहुंचे. जैसे कि सीरियल्स में यूज ऐड होता है स्ट्रॉ, हस्क, स्टोन्स, inferior quality grains, infected और insect infested grains. Next is pulses में adulteration हो जाता है straw, केसरी दाल, inferior quality of grains, inject grains, infected grains, mannitol yellow dyes. Milk में यहाँ पर adulteration हो जाता है starch, water, milk of other animals, extraction of fats and synthetic milk. एडिबल ऑयल्स में यहाँ पर जो नुकसान पहुंचाता है एडिबल ऑयल को विटामिन कंटेंट कम कर देता है. दैट आर मिनरल ऑयल्स, आर्जिमोन ऑयल एंड आर्टिफिशियल कलर्स. टर्मरिक में हल्दी में स्टार्च कलर विद क्रोमेट एंड मेटानिल येलो डाई. कोरिएंडर में पाउडर्ड काउ डंग, सॉडस्ट स्टार्च. ब्लैक पेपर में ड्राइड पपाया सीड्स. तो ये जो है वो फूड एडल्टर कर देता है, कोई ऐसी चीज उसके साथ ऐड करते हैं जिससे उसकी जो कंटेंट होता है मिनरल, प्रोटीन, विटामिन की, न्यूट्रिएंट की, वो यहाँ पर कम हो जाती है. क्योंकि हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर द कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द डिसऑर्डर्स. द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में जो भी हमने एब्जॉर्ब किया है, इल हमने एब्जॉर्ब किया जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसको बाकी सारी बॉडी तक, पूरी बॉडी तक कैसे पहुंचाया जाता है. The distribution of food and oxygen to all parts of body as well as removal of body wastage is performed by the transport system within the body of all living organisms. The body also secretes many hormones which is carried out to the target organ. The flow of fluid within the body of transport purpose is termed circulation and the organ for circulation constitute circulatory system. तो यहाँ पर circulation में plants की पहले हम बात करेंगे. Transport of mineral in transportation of water. The roots plant take up water and minerals. How it would be move up? It's the xylem phloem जो कि हमने पढ़ा था. The trachea and vessel are non-living cells of xylem transport water picked by root hairs. The upper movement of water and mineral from soil term ascent of sap जो कि water को खींचता है against gravity is due to the transpiration pull. Transpiration is a process in which a lot of water evaporates from stomata. This evaporation creates a vacuum and pulls up water through xylem is called transpiration pull. तो यहाँ पर transpiration pull ascent of sap जो कि terms है जो कि water is just like a nutrient for plant. तो that's why for not facing the deficiency for plants too, they perform such activities like ascent of sap, transpiration to develop in themselves for better nutrients. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स. तो शुगर है वो यहाँ पर जो फूड मटेरियल्स है वो यहाँ पर ट्रांसफर होता है फ्रॉम फ्लोएम. तो फ्लोएम हैव सीवी ट्यूब्स आर द लाइन लिविंग सेल ऑफ फ्लोएम व्हिच ट्रांसपोर्ट फूड. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ओके, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कहते हैं फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी फूड को जाना. This food may be stored in fruit, stem or root. तो ऐसे स्टोर होते हैं. While in human beings हमारा blood है, okay, the centrally located muscular pump called heart and blood vessels which are tube-like structure connected to
heart. Blood vessels are of three kinds. Arteries, that is carry blood from heart to various parts. That is vein, that will bring blood from various body parts to heart. And capillaries, that thin vessels between the artery and the vein. The capillaries allow the exchange of material between the blood and tissue. यहाँ पर जो arteries and vein है वो यहाँ पर heart की जब बात करते हैं, heart is a powerful muscular organ lying between the lungs. It is a four chambered, right, two auricles and two ventricles. Auricle को हम atrium भी कहते हैं. The heart is made up of specialized muscle cells or cardiac muscle fibers which contract and relax without getting tired. The contraction and relaxation follows a rhythm called heartbeat. Thus, the heart pumps into the blood vessel. The rhythmic beat results in the proper transportation of water substance from various organs. That is, in 1 minute, normal heartbeat beats 72 times. Abnormalities heart can be seen taken by ECG, that is electrocardiogram, जिसमें हमें पता चलता है कि हार्ट जो है वो बीट कितनी टाइम कर रहा है. तो ऑक्सीजन laden blood from left ventricle and pumped in the large artery called aorta. It carries oxygenated blood from all parts of the body. The general plan of human circulatory system is given by this. के बीच में यहाँ पर हार्ट है, यहाँ से जब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो जाता है हेड तक और यहाँ पर रेस्ट ऑफ बॉडी तक. अब वहां से जो नॉन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो वापस जाएगा लेफ्ट साइड वाले में, हमारी बॉडी के राइट साइड वाले में, राइट atrium, right ventricle. Then again it go to lungs. Then again they got oxygenated. Blood pressure, it is force with which the body pushes against the wall of arteries. It is generally measured in terms of how high it is pushed of a column of mercury. When ventricles contract, pressure of blood inside the artery is highest. Okay, in the healthy human being, it is about 120 millimeters of mercury. When the ventricle relax, the pressure of blood is 80. So means 80 to 120 यहाँ पर हमारा blood pressure होता है. Thus, healthy man has normal blood pressure 120/80 mm of Hg. The instrument जो कि blood pressure को measure करता है उसे कहते हैं sphygmomanometer. Okay, pulse rate. The systematic contraction and relaxation can be felt as a jerk. Certain arteries, like हमारे wrist पे देख ले, neck पर देख ले, या फिर foot में देख ले, तो यहाँ पर हमें jerk feel करेगा. तो there is superficial position which arterial pulse हमें measure. Pulse rate is the same as the rate of heartbeat. ना pulse rate होता है उतनी ही heartbeat होती है. Circulatory medium जहाँ पर हमारा food वो circulate करता है वो medium हो जाता है हमारा blood that is found in heart and blood vessels. Tissue fluids found in space between cells and organ. Lymph that is found in lymph vessel and lymphatic organs. So यहाँ पर ये सारे हैं जिसमें blood क्या constituent है. Blood is a connective tissue that circulates throughout the body. It is made up of a fluid medium called plasma which flow two types of blood cells, red blood cell and white blood cells, and cell fragments called blood platelets. Blood cells are manufactured in bone marrow, जो कि bone marrow रहती है हमारे, वहाँ पर blood vessels ये सारे develop होते हैं. RBCs are circular in shape and contain a red color pigment called hemoglobin. No nucleus, they are denucleated, and RBC carry oxygen to tissue and bring back to carbon dioxide to the tissue. जो white blood cells होते हैं, they are the soldiers. Since they carry no pigmental color as they have irregular shapes, they provide body from infection by eating up germs or by producing antibodies to fight antigens. Blood platelets, these are very small fragments of cell. They have no nuclei. They participate in clotting of blood. The function of blood is carrying nutrients, oxygen, carbon dioxide, hormones, enzymes, waste materials to the relevant part of the body. Some medicine when taken in the body are distributed through blood. जो कि blood में देते हैं कोई भी, वो यहाँ पर blood से ही पूरी body तक पहुँचता है. Blood group transfusion, यहाँ पर जो blood group हमारा divide किया गया है वो किस तरह है? You must have heard the arrangement of people undergoing a surgery, or in case of accident, in case of people suffering from thalassemia. This arrangement is replaced by blood loss of patient. तो यहाँ पर inject blood in the body outside, this is called blood transfusion.
Blood transfusion successfully only when the blood group of donor and blood group of recipient match, means जो सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए या फिर एक का O होना चाहिए, जो डोनर का O होना चाहिए। अनमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन causes agglutination, जो कि RBC due to which recipient may even die. On the basis of types of protein present in blood, the system of blood यहाँ पर ABO system होता है, जैसे A, B, AB and O are different type of blood groups. Antigens present in membrane of RBC of transfused blood is counteracted by antibodies present in the plasma. Blood group A antibodies B and can donate blood, जो भी O है O blood group O positive, they can donate to every other blood groups. The person with blood group O can donate blood to all. So O group is called universal donor and AB blood group can receive from all blood group, that is called universal recipient. जो AB blood group है वो सभी का ब्लड ले सकते हैं और जो O है वो सभी को ब्लड दे सकते हैं। Lymphatic system. Lymph is also circulatory system, just like having lymph vessels. It is lighter yellow in color. It always flow only in one direction from tissue to heart. वो tissue से heart तक ही flow करता है। It always flow in one direction. Cells called lymphocytes eats up the germs and prevent body from infections. And in returns, proteins of fluid are circulation to the tissue. Heart के disorders जैसे कि हो जाता है heart attack, like all other, heart also need nutrients and oxygen. When arteries supplying the heart become thick due to age and fault diet, consists of excessive fatty food. Muscle cells of heart cannot beat in the proper rhythm. Heart attacks occurs when the defect in abnormal ECG. Intermediate medical treatment is required. अगर जो heart attack हुआ है तो anemia, when hemoglobin level falls or under a certain point, the condition is called anemia. It makes the person weak and look pale and inactive. Iron in the diet helps to remove anemia. Leukemia, it is a blood cancer. The bone marrow makes excessive WBCs and few RBCs, जिसे कहते हैं leukemia, blood cancer. The hypertension, it is another term of high blood pressure, that is leads to headache, dizziness and fatigue. The normal blood pressure is 120 to 80. Proper diet, exercise, medicine, tension-free mind helps to cure high blood pressure. तो यहाँ पर blood related भी हमने हमारा topic finish किया, including digestive system as well as blood circulatory system. As you know, you have all the next question you have to do on your own. So next we are going to see that is a respiration. तो respiration means जो कि food है उसमें से ऑक्सीजन, food हमने absorb किया उसमें से energy release करना. तो we can live without food for several days, but we cannot live without breathing. Okay? So उसे हम कहते हैं breathing provides oxygen to our cell for oxidation of food in order to generate energy for various activities. हमारी बॉडी में से जो हमने खाना खाया है उसमें से एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है. Respiration in plants, they do not have any special respiratory organs. Roots take up the oxygen from air, trapped by the air by means of root hair. Root hair embedded in soil, oxygen is surrounded, diffuse the root hair into their roots. Carbon dioxide is given out, similarly diffuses the root. Stomata in leaves open and let oxygen in. Release carbon dioxide. तो यहाँ से वो stomata से वो respiration करते हैं plants. In the older plants of root or bark of woody plants, tiny opening called lenticels are present. तो bark में भी lenticels present. It is through this lenticel that oxygen reaches the inner living tissue and carbon dioxide goes out. Guard cells help in the opening and closing of stomata. When guard cells get filled up with water, these swells become turgid. The two guard cells curve away from each other. Another opening of food. When guard cells become flaccid, stomata closes. Minerals also play an important role making the guard cells turgid and flaccid. Breathing in humans. तो जब ह्यूमन में हम देखते हैं तो inhale exhale, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. Inhaled cellular expiration. तो breathing है cellular respiration दो टाइप के होते हैं. Respiration की processes. Along inhalation of air containing oxygen and exhalation of carbon dioxide. Cellular respiration is responsible for release of energy by oxidation of food and it conversion into ATP. Respiration is a different type. Okay, respiration is different from breathing. Breathing में सिर्फ हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेकिन respiration में energy release होती है. Breathing is a physical process
of respiration of gaseous action between the organism and environment by diffusion. It takes place in lungs. On the other hand, the respiration involves oxidation of food and release of energy which takes place at the cellular level. The respiratory system of human being as part follows. External nose, nasal cavities inside nose, internal nostrils, pharynx that leads to windpipe or trachea divides into bronchus which leads into two lungs. तो lungs के अंदर bronchus. The opening of the pharynx into trachea called glottis or epiglottis. Trachea is thin walled. It do not collapse even when there is enough air, and it is supported by a ring of cartilage. Trachea bifurcates into bronchi. तो trachea divide होती है bronchi में. Lungs enclosed within them branches of bronchi, that is bronchioles, which branch further end up in very thin walled sac-like structure called air sac or alveoli. See the figure. The voice box जिसे कहते हैं हम larynx में से हम आवाज आती है. Mechanism of breathing, that is inhaling and exhaling. In inhaling, the result of increasing volume of thyroid cavity, the increasing caused by changes that takes place in human diaphragm. So diaphragm straight डायग्राम्स हम पढ़ेंगे. जब हम सांस लेते हैं तो जैसे रिब केज रेज लंग्स एक्सपांड और जो एल्वियोल होती है जो कि हमारी लंग्स में वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से वापस आया है वो वापस एल्वियोलाई ब्रीथ में वापस डालती है. और व्हेन हम एक्सहेल करते हैं तो लंग्स बिकम स्मॉलर, रिब के जाओ है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. इतना ही ऊपर पूरा समझाया गया है. ब्रीथिंग रेट व्हेन एट रेस्ट human breathing rate 16 to 18 times a minute. एक मिनट में 16 to 18 है. Breathing rate increasing during physical activities, disease, fever, pain, under stress, इस टाइम में breathing बढ़ती है. Gases exchange, जो कि एक्सट्रा रेस्पिरेशन कैसे होता है. Inhalation fills in the alveoli of lungs with oxygenated air. The oxygen has to reach the various tissue of the body. Thus, at the first step, blood capillaries on alveoli pick up the oxygen from alveoli and carbon dioxide brought by the capillaries from tissue in exchange of oxygen. तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो सारे सेल्स करते हैं. In the tissue, oxygen gets used up and carbon dioxide accelerated, which is now exchanged for oxygen in the blood. The carbon dioxide picked up by the blood from tissue and carried to the heart by vein. Cellular respiration inside the cell. Mitochondria is a powerhouse. So digested food which has released of the tissue as result carbon dioxide are released. It occurs in mitochondria of the cell and is called respiration. Okay. Human excretory system, जो कि human excretory system है वो कैसी होती है वो हम देखेंगे. In human being, the excretion is carried out by the organ system like urinary system or excretory system. See, locate the following. Two being shaped called kidney. Look at the diaphragm and the abdomen towards the back. The two excretory tubes of ureters, one from kidney, one urinary bladder ureter is open. Okay. Muscular tube called urethra from the bladder, the urine is open the end at the urethra. तो जो यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है जो कि ब्लड फिल्टर हुआ है वो आकर यूरिन इन फॉर्म ऑफ यूरिन वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है और जब भी यहाँ पर पुल होगा भरा जाएगा urinary bladder will be full, then it will be let it out through the urethra. So here we will continue to learn a human excretory